Now we start chapter 4, quadratic equation, exercise 4.3. Question number 3, find the root of equation x minus 1 upon x equal to 3. Now we are taking the LCM x. यहाँ अपन 1 समझेगा x into x square minus 1 equal to 3. Therefore, x square minus 1 equal to क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into x. ठीक, हम क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया. नाउ सेम साइड x स्क्वायर minus 3x minus 1 equal to 0 is compare with ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore, a equal to coefficient x square 1 तो 1, b equal to minus 3, c equal to minus 1. b square minus 4ac डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी बोलते हैं, इक्वल टू minus 3 होल स्क्वायर minus 4 1 minus 1 9 plus 4 13. 13 is positive. Equation has two distinct real root. पॉजिटिव होता है तो टू डिस्टिंक्ट होता है, इक्वल टू 0 होता है, इक्वल रूट होते हैं, लेस देन 0 नो रूट. नाउ x इक्वल टू माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. x इक्वल टू माइनस b minus square root of b square minus 4ac upon 2a. Value of b minus into minus 3 plus square root of 13, 2 into 1. Value of b minus into minus 3 minus square root of 13 upon 2 into 1. x equal to 3 plus root 13 upon 2, x equal to 3 minus root 13 upon 2. Therefore, roots of equation are 3 plus or minus square root of 13 upon 2. This is the answer.